Good morning, dear students. This is second part of the video of chapter number 4, Understanding Laws. And in this video, we will talk about domestic violence. So before starting this topic, I want to tell you about rule of law. In the beginning, they were talking about definition of law, constitution. Now I want to tell you about what does the rule of law says. As I have already said that it means that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. Not even the prime minister, not even the president, no one, neither a government official nor a wealthy person, nor even the president of the country is above the law. So this is what rule of law says. Okay, so let's start with the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. Why is it called 2005 or 2006? I will clear you a bit later, but let's start. What does it include? It includes harming or injuring a woman in a domestic relationship. The abuse can be physical, sexual, verbal or emotional, or it can be the economic abuse. I have already categorized the physical and economic abuse. Now I will make the definition out of all the abuses. It refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an adult male, that usually your husband, against his wife. Injury may be caused by physically beating up the woman or by emotionally abusing her. Abuse can be verbal, sexual or economic abuse. So this is the definition. I hope very simple. Okay, now what does our law says regarding Protection of Women from Domestic Violence Act? Now I will tell you properly about this. An act to provide more effective protection of the rights of women that guaranteed under the Constitution, whosoever are the victims of this violence, kind occurring within the family and for matters connected therewith incident. It means जो लोग भी इससे पीड़ित हैं, जो लोग घर में फैमिली में पीड़ित होते हैं, उन सब के लिए ये एक्ट बनाया गया, जिसमें इस एक्ट को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में लाया गया and on 13 September 2005 it was signed or assented by the president and it came into effect on or commenced from 26th October 2006. All right, that's all about this. Now this is the extract from your book. India is a patriarchal society. That means where we live with our parents, where males play a dominant role. More often than not, women are at the receiving end of male domination. The males usually try to dictate the way a woman should live. ज़्यादातर मेल्स क्या डिक्टेट करते हैं, क्या कोशिश करते हैं, कैसे रहना है, वो मेल्स बताते हैं. Sometimes this domination takes the extreme form of violation of basic rights of women. कभी कभी तो क्या होता है, डोमिनेशन इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आ जाता है कि बेसिक राइट्स जो हैं वुमेन के वो भी छिन जाते हैं. वुमेन्स आर वर्बली फिजिकली अब्यूज, जिसको हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं. और आगे वही सेम डेफिनेशन आपकी, दैट इंजरी और हार्म और द थ्रेट ऑफ इंजरी और हार्म बाय एन एडल्ट मेल टू द वाइफ और द डॉटर और द मदर इज टर्म्ड एज डोमेस्टिक वायलेंस. आप किसी को भी धमकी देते हैं, चाहे आप उनको हार्म करने की कोशिश करते हैं, वाइफ को या डॉटर को और मदर को, इसे हम डोमेस्टिक वायलेंस कहेंगे. All right? Okay, so the next extract is, there has always been continuous demand for a stringent law which could work as a deterrent against the domestic violence. इसका मतलब है हमेशा से सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में ये डिमांड रही है कि एक बहुत सख्त कानून आना चाहिए इन सभी वायलेंसेस के खिलाफ. Many women organizations mooted the idea of helping women who had suffered domestic violence. और कई बार तो women's की organizations बनाई गई जिसमें ये देखा गया कि वहाँ पे
one woman wants to help the other woman who was suffering the same domestic violence. Even political organizations wanted a law to come into effect. Throughout the 1990s, many protest rallies, public protest and awareness programs were launched to create pressure on the government. कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ये चाहते थे कि ऐसा कोई कानून आए, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, कई प्रोटेस्ट रैलीज निकाली, पब्लिक लोगों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट और अवेयरनेस प्रोग्राम्स को लॉन्च किया, सो दैट एक प्रेशर बनाया जा सके ऑन द गवर्नमेंट. ठीक है, तो आपने देखा क्या हुआ स्टार्टिंग से और अब तक कई विमेन ऑर्गेनाइजेशंस बने जिन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके ये बनाया. नाउ सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट रहा ऑन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये देखना बेहद ज़रूरी था. मगर इससे पहले क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ. इन 1999 lawyers, group of law students and activists had a nationwide consultation from among various pressure groups. इन सभी लोगों ने ग्रुप्स बनाए अपने और नेशन वाइड कंसल्ट करके एक प्रेशर ग्रुप बनाया. Finally, the Domestic Violence Prevention and Protection Bill was drafted. और इन सब की मदद से इन्होंने एक बिल को प्रिपेयर किया जिसे नेशनल कमीशन फॉर विमेन प्रेजेंटेड द ड्राफ्टिंग टू द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, जिसको इन्होंने नेशनल कमीशन जो विमेन के लिए है वहाँ से ड्राफ्ट करवाते हुए स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट में ड्राफ्ट करवाया. उसके बाद द कमेटी एनालाइज द ड्राफ्ट एंड एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द डिमांड्स इन इट. कई सारी जितनी भी डिमांड्स थी उनको एक्सेप्ट कर लिया गया और इसकी रिपोर्ट को राज्यसभा में 2002 में दिया गया एंड लेटर टू द लोकसभा. फाइनली अ न्यू बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट. इसी तरह से हमने देखा कैसे एक न्यू बिल प्रिपेयर हुआ एंड वॉज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा. After that, it was sent to the president for final assent. हम सब जानते हैं बिल के बनने के बाद उसे प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है. For thus, the Protection of Women from Domestic Violence Act came into effect in 2006. तो हमने देखा कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, कब से इसके लिए चीज़ें चल रही थी और कब इस बिल को फाइनली प्रिपेयर करके ड्राफ्ट करके पहुंचाया गया. ड्राफ्ट के बाद ये कैसे 2006 में आते आते इसको इफ़ेक्ट में लेके आया गया. आपको कई चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है इसमें कि सबसे पहले इसकी जो ड्राफ्ट थी वो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को दी गई और रिपोर्ट राज्यसभा और लोकसभा में सबमिट हुई. तो नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है आपका, लेट अस समराइज द की पॉइंट्स फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल. अब हम सभी पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे और कंक्लूजन बनाएंगे. That citizens play an important role in stressing the need for a new law. ये कानून क्यों बन पाया, क्योंकि हमें ही इसकी नीड थी. Different pressure groups and the media provide a channel. अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स ने, जितने भी हमारे लॉयर्स थे, लॉ के स्टूडेंट्स थे, सब ने मिलके एक ग्रुप बनाया जिससे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ और मीडिया के थ्रू, एक चैनल के थ्रू हमने क्या किया, अपनी वॉइस को रेज किया. डिमांड फॉर अ न्यू लॉ नीड्स टू बी सबमिटेड टू द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी. और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे पार्लियामेंट्री कमेटी को हम रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं. द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट्स टू बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट फॉर डिस्कशन. दोनों हाउस में इसके ऊपर डिस्कस होता है एंड वंस द बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट. और आप ऊपर देख रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर विमेन की पिक्चर. आफ्टर द प्रेसिडेंट assent, necessary procedures are followed to bring the new law into effect. So by this video I want to say that the Protection of Women from Domestic Violence Act is there to help you. Don't raise your tolerance level, but you need to raise your voice. So I hope you are able to understand about domestic violence. That's all for today. Thank you very much. I hope I am able to make you understand. That's it for today.